Hello my dear students, wish you a very happy Janmashtami. On the occasion of Janmashtami today we are going to make one peacock feather and we'll write happy Janmashtami over there, and you can make such sort of drawings in your drawing file. Let's have a look. See, अभी मैंने यहाँ ऑरेंज कलर किया है. ऑरेंज कलर करने में मैं उसको एक बैकग्राउंड दे रही हूँ इस तरह से. जब हम ऑरेंज कलर दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा लाइंस ना आए. आप चाहें तो इसमें पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं. दोज कलर्स विल बी द बेस्ट. ऑयल पेस्टल कलर में मेरे इतनी लाइंस इसलिए आ रही हैं बिकॉज हमें उसे वैसे भी ब्लेंड करना है. वी विल ब्लेंड दीज कलर्स, वी विल मिक्स इट. ओके, बट पेंसिल कलर से अगर जब भी आप कलर करें तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा लाइनिंग्स, एक्सेसिव लाइनिंग्स ना आए. इसमें मैंने ऑरेंज एंड ग्रीन कलर कंप्लीट कर दिया है. अब मैं इस पे येलो कलर करने वाली हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट येलो कलर सेंटर पार्ट. इफ यू वांट यू कैन इवन कीप इट वाइट ऑल्सो. सेंटर पार्ट पे कभी भी बहुत डार्क कलर ना दें बिकॉज अगर आप उस पर कुछ लिखेंगे तो दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू राइट ऑन डार्क सरफेस. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. ब्लेंड करने के लिए यू कैन टेक अ सॉफ्ट टिश्यू पेपर और यू कैन टेक कॉटन और यू कैन टेक अ नॉर्मल रेगुलर पेपर. तो इस तरह से हमें कलर को ब्लेंड कर देना है. तो इस तरह से मैंने एक बैकग्राउंड रेडी कर लिया है. अब मैं इस येलो कलर पे थोड़ा सा वाइट कलर का मिक्सिंग डाल रही हूँ. Like this, you can clearly see that white color. Here I want white background. So this background got light enough. Now let's make a circle and we'll make one peacock feather here. Otherwise you can directly make one peacock feather from here. Okay, so let's see. Like this I have taken. Okay.
Okay. Now I have taken purple color. If you want, you can take dark blue color. Okay. Now let's take light blue color. Now I'm taking green color. Here you can take little red color or brown color. If you have brown color, you can take it. If you have red color, little red color I'm taking here, and you can even use brown color. And now light green color over here. Like this. And now last but not the least, dark green color once again, like this. Alright, I'm going to blend it very little bit because mine are oil pastel colors. If you will use sketch colors or poster colors or watercolors, you don't need to blend it so much. Can you see that properly? Alright, now here I am going to give feathers. If you want, you can even use sketch colors. Okay. अभी हम यहाँ डार्क ग्रीन कलर कर रहे हैं. Later words will even mix brown color and light green color here. Like this. Alright.
इस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्माष्टमी ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। So our Janmashtami card background is ready. Happy Janmashtami to all of you. Our Janmashtami drawing is ready. How do you feel? Do you like it or not? Just tell me in the comment section. Take care. इस तरह से आप लास्ट में इसे एक फाइन लुक दे सकते हैं। All right. Happy Janmashtami to all of you. Take care. Enjoy.